गुलाब फलारी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जे कॉलेज आरा। आज के मेरे लेक्चर का टॉपिक है हाउ प्राइस एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन थ्योरेटिकल फॉर्म एंड इन मैथमेटिकल फॉर्म। अर्थात एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, उसे एक थ्योरेटिकल रूप में और एक मैथमेटिकल रूप में आप लोगों को आज हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले, इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशन akin to pure monopoly and perfect competition are remote possibilities। अर्थात व्यवहारिक जीवन में न तो प्योर मोनोपोली पाया जाता है और न ही परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है। The reality lies a midway between these two extreme cases where we may face imperfect competition developed by Mrs. John Robinson। व्यवहार में जो है प्योर मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बीच की स्थिति देखने को मिलती है, जिसे इम्परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, और इसे इंट्रोड्यूस करने का श्रेय मिसेस जॉन रॉबिन्सन को है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, कई तरह के होते हैं, सच एज duopoly, oligopoly and monopolistic competition इनमें से। duopoly में two firms to share the market competing each other। अर्थात duopoly में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, केवल दो फर्म होते हैं जो पूरे बाजार में सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं। नेचुरली दोनों के बीच में कंपटीशन होता है, कंपीटिंग विथ ईच अदर। And under oligopoly, here a few firms is there and there is a close rivals between these two firms। Under monopolistic competition, there are many sellers of a commodity, but the products of such seller differs from that of other sellers। अर्थात मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म की संख्या बहुत अधिक होती है और एक फर्म की वस्तु दूसरे फर्म की वस्तु से डिफर करता है। एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ वेरियस प्रोड्यूसर्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। उसके निकट स्थानापन्न होते हैं। टेक फॉर द एग्जांपल हियर टूथपेस्ट। In the market you may find a variety of toothpaste like Close-up, Colgate, etc। कई तरह के टूथपेस्ट बाजार में, हर कोई एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट्स है, लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। उसी तरह टीवी सेट्स, डिटर्जेंट एक्सेट्रा आते हैं। एंड दिस monopolistic competition again is here is developed by Professor Chamberlain। Chamberlain has introduced this concept। Chamberlain ने इस concept को introduce किया है। Now, in monopolistic competition, the concept of industry is undefined। एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता में इंडस्ट्री जो है वह डिफाइन नहीं होता, परिभाषित नहीं है, अनडिफाइंड है। एज प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड एंड इन स्टेट ऑफ इंडस्ट्री द टर्म ग्रुप शुड बी यूज्ड। इंडस्ट्री की जगह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ग्रुप का शब्द का प्रयोग करते हैं। अगेन, selling costs are play an important role
in the product, and the selling cost are advertisement, window display, salesman salary, etc. Under monopolistic competition, incur selling cost to increase the demand for its product. अर्थात एडवर्टाइजमेंट इसलिए किए जाते हैं, सब तरीके अपनाए जाते हैं ताकि उसके प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ सके. एंड अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द फर्म एम्स एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. फर्म का उद्देश्य लाभ कमाने का होता है. And in the short run, the firm may have to face three situations. For the sake of simplicity, we may divide the equilibrium under two heads: short run and under long run. शॉर्ट पीरियड वह पीरियड है जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट को बदला नहीं जा सकता है. लॉन्ग पीरियड में सभी फिक्स्ड कॉस्ट जो है will become the variable cost. And under short period, a farmer have to face three situations: earn supernormal profit, normal profit, and it incurs losses also. Now the diagrammatic representation of all these three situations. In this diagram, a farm is getting supernormal profit, and the firm is equilibrium at this point E. At this equilibrium point, there is equality of MC and MR. And firm, here in this situation, here AR is greater than AC. AR is MA and AC is MCB. So firm gets abnormal profit like this areas. PACB shows the supernormal profit area. Another situation, normal profits, where AR equal to AC and equilibrium point is attained. Also here at this point, MC equal to MR, and this is the average revenue AM. NAC is also this one. Both are equal, so the firm is getting only normal profit. फर्म को लॉसेस भी हो सकते हैं. तो इस डायग्राम में फर्म का लॉस तब होगा जब AC ग्रेटर देन AR हो. नेचुरली फर्म का AC जो है वह M है और AR जो है वह AM है. So the firm's losses may be shown in this area. Now in the long run, group equilibrium. The most distinguishing features of the monopolistic competition is product differentiated. This is the most important features. And in the long run, firms earns only normal profit. At this point, at this equilibrium point, firm is getting normal profit only, and at equilibrium point there is equality of LMC equal to MR and AR equal to AC. Both are equal. But at this point, LAC is minimum, and at M1 level of output, there is a excess capacity of a firm. Now, excess capacity equal to optimum output minus actual output, and excess capacity here M1, optimum output
OM1 minus actual output OM. This is the situation of monopolistic competition, both in the short run as well as in the long run. Now this part is a theoretical part, and in mathematical form we may also prove the same ideas. Let us suppose that the initial demand function for the firm is given as Q1 equal to 100 minus 0.5 P1 and P1 equal to 200 minus 2 Q1, and the TC is given as TC equal to 1562.50 plus 5Q minus Q square plus 0.0523. These are the given. Now, given the price function P1 equal to 200 minus 2Q1, and TR1 can be obtained as TR1 equal to P1 into Q1. Now given demand function P1 equal to 200 minus 2Q1, this one, so TR1 equal to 200 Q1 minus 2Q square. And when we differentiate TR1 with respect to Q1, we get MR1, and this is the MR1 function. Given the firm's TC function, TC, this one is, and LAC average, long run average cost equal to TC by Q. When we divide TC by Q, we get LAC, and LAC cost function is this one. Again, when we differentiate TC, given TC, with respect to Q, we get LMC, long run marginal cost, and this is the long run marginal cost. Under short run equilibrium, there is equality MR1 equal to LMC. MR1 200 minus 4Q1 and LMC equal to 5 minus 2Q plus 0.15Q square. Now, for uniformity's sake, let us replace Q in MC function as Q1. We get this one, 200 minus 4Q1 equal to 5 minus 2Q1 plus 0.15 Q1 का whole square. Now rearranging this one, 195 equal to 2Q1 plus 0.15 Q1 का whole square. Now in order to eliminate fraction, that is 0.15, we multiply both sides by 20. फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए दोनों साइड 20 से गुना करते हैं. Then we get this one, 3Q square plus 40Q1 minus 3900 equal to 0. Now by solving these functions, we get Q1 equal to 30
Now, given P1 equal to 200 minus 2Q1 and putting the value of Q1 in the said functions, we get P1 140. LSE, when we put Q1 equal to 30 in LSE function, we get this one. 72.08. And supernormal profit, pi profit, AR1 minus LAC. Now calculated AR 140 minus calculated LAC 72.08. After deduction, we get 67.90 per unit output. This is the short run equilibrium. Now in the long run, let us suppose firm's demand function in the long run may be Q2 equal to 98.75 minus P2 and P2 equal to 98.75 minus P2. In similar way, TR2 can be obtained by multiplying Q2 and we get this one 75 Q2 minus Q2 whole square. And when we differentiate TR2 with respect to Q2, we get MR2 like this one. Now again, for the sake of uniformity, replace Q in the LMC function as Q2. We get ML. And now MR2 equal to LMC equilibrium can be obtained. We get Q2 equal to 24. Now in the long run, at the equilibrium point, P2 equal to AR2 equal to LAC. Now P2 98.75 minus Q2 equal to 1562.5 divided by Q2 plus 5 minus Q plus 0.05 Q square. Now solving this, both are equal here, 73.75 AR2 and LAC 73.7. So at this equilibrium point, there is equality of P2 equal to AR2 equal to LAC, both are equal, that is 73.75. So for getting only normal profit in the long run. That's all.